জোৱান পুত্ৰ অহা কথা আছিল ঘৰলৈ। কিন্তু আহিল নিথৰ হৈ। পাঞ্জাৱত মৃত্যু হ'ল অসমৰ সেনা জোৱানৰ। 17 জানুৱাৰীত পিতৃয়ে উঠাই থৈ আহিছিল ট্ৰেইনত। পোষ্টিং হৈছিল পাঞ্জাৱত। কিমান যে আনন্দিত হৈছিল পিতৃ মাতৃ, কিন্তু সেই সুখ সেই আনন্দ ক্ষন্তেকীয়া হৈ ৰ'ল। চাওক নিয়তিৰ খেল। এই আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুক্তি পায় তাৰ কামনাৰে মই পৰিয়ালৰ সকলোৰে হৈ মই দেউতা হৈ মই ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছোঁ, মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেওঁ যেন সুখত থাকে, শান্তি পায়। দেশমাতৃৰ বাবে ওলাই যোৱা মাধুৰ্য তালুকদাৰৰ সপোন নহ'ল বাস্তৱ। পাঞ্জাৱত অনুশীলন কৰি থকা অৱস্থাত জোৱানজন আক্ৰান্ত হৈ জ্বৰত। 3 দিন ধৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱা মাধুৰ্য অৱশেষত আহিল কফিনত। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল মাধুৰ্য। ট্ৰেইনিং শেষ কৰি অহা কথা আছিল ঘৰলৈ, কিন্তু পাঞ্জাৱত বিধ্বস্ত বানৰ বাবে ফ্লাইটৰ টিকট কৰিও ঘৰলৈ আহিব নাপালে। যোৱা 8 মাহ পূৰ্বে 20 বছৰীয়া মাধুৰ্য তালুকদাৰে সেনা বাহিনীত যোগদান কৰিছিল। মাধুৰ্য ল'ৰাজনক আমি সমস্তই যেনেকৈ জানো, আচলতে মাধুৰ্যই আছিলে কিন্তু নিয়তিৰ খেলা। বীৰগতি পালে যোৱাকালি দিনৰ 10 বজাত বুলি আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। 10 বজাৰ পৰা এই অঞ্চলৰ মানুহৰ গাত শান্তিৰ বীজ চলিছে, কান্দিছে, আহিছে, সান্তনা দিছে। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই বীৰগতি পোৱা মাধুৰ্যৰ জীৱ যাতে ঈশ্বৰে মুক্তি দিয়ে, শান্তিত ৰাখে, স্বৰ্গত বাস কৰে, তাৰে কাৰণে অঞ্চলৰ ৰাইজে সেয়াই কৈছোঁ। তাত বাদে আমাৰ আৰু ক'বলগীয়া নাথাকে। एक दिन पहले बुखार आ गया था, अचानक बुखार, डेंगू जो मलेरिया है ना, बुखार आ गया वहाँ। जो अभी अचानक बाहर आने का बजाय उसमें क्या पानी वगैरह ख़राब हो गया, तो डेंगू मलेरिया तकरीबन आदमी का हो रहा है, पानी का वजह हो रहा है वो। तो ये भी उसमें चपट में आ गया। ठीक है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल वगैरह लेके गया था, ट्रीटमेंट हुआ। कितना दिन से हुआ था वो? बस अचानक हो गया बीमार। ठीक है सर, ये आप लोगों का हॉस्पिटल में है या प्राइवेट? ना, हमारा हॉस्पिटल था। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एड देने के बाद फिर हम सिविल में रेफर किया था। वहाँ हॉस्पिटल में कितना दिन रहा? वो ज़्यादा नहीं, 1 दिन था। ठीक है, अचानक उसमें क्या है, प्लेट वगैरह डाउन हो जाता है। टाइफाइड और डेंगू होगा ना, अचानक प्लेट डाउन होने से फिर वो उसमें सांस वगैरह भी तकलीफ दे देता है। फिर एग्जामिनेशन में डेंगू हुआ क्या? हाँ, डेंगू निकला है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसमें हम लोग को भी दुख है, बेचारा 20 साल का है। ठीक है, ट्रेनिंग कर रहा था, 6 महीने ट्रेनिंग कर लिया, 6 महीना कंप्लीट हो गया। अभी वो उनका जो मिट्रम मिलता है ना, वो भी आने वाला है। सभी को मिट्रम अभी आ जाएगा, होने वाला था। उनका भी छुट्टी हो गया था? हो गया था, मतलब अचानक ये हो गया बाहर का। हाँ, उसको बाहर ज़्यादा आगे पंजाब में ज़्यादा नुकसान हो गया था। বজালিৰ পৰা তাপস ঘোষৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।